लिंक सेंड कर देता हूँ. I am sending the link now. Okay. हाँ बेटा हेडलाइन. ओके. Didn't hear. Tap microphone to try again. हाँ बेटा लिंक जस्ट आई एम सेंडिंग नाउ. हाँ बेटा लिंक जस्ट आई एम सेंडिंग नाउ. Link send now.
हाँ बेटा, अभी इस जगह पे क्या लिखा जाएगा बेटा? ये किसका डेफिनेशन हुआ? लिखिए चैट बॉक्स में। फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction and obeys the triangle and parallelogram laws of vector addition and subtraction is called. Answer will be यहाँ पे जो आएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग डिसाइड करो क्या लिखना है। Two vectors are said to be equal if they have equal फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा? चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धीरे धीरे अभी शुरू कर रहे हैं बेटा, मेन जो है फंडामेंटल चीजें मालूम हो उसके बाद। ओके, फिल इन द ब्लैंक से you have to fill up, otherwise में बताएंगे। ओके combination of two or more vectors which produces the same effect as two or more vectors collectively produce is called dash vector। अच्छा डिसाइड कर पा रहे हो बेटा क्या लिखना है? अच्छा मैं थोड़ी देर बाद लिख दूं, पहले तुम डिसाइड करो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है। ओके निखिल कुछ लिख रहे हो? ओके अच्छा विवेक प्रेजेंट हो? ओके गुड, ओके गुड। अच्छा ठीक है, जो प्रेजेंट हो लिख देना। अभी फिल इन द ब्लैंक्स तुम चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, इसमें भी सेंड कर सकते हो। डेफिनेशन भी याद हो जाएगा और कोई टेंशन भी नहीं होगा।
थोड़ा इस तरफ से बनाओ। तो ये जो देखो दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, और इसको बोलते हैं कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। Triangle of vector addition. It states that if two vectors can be represented both in magnitude and direction, by two sides of a triangle in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude एंड डायरेक्शन। पहले बेटा मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा? पहले सारी चीज को लिखवा देता हूं, उसके बाद हम उसके एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, ओके? और तुम लोग को याद हो जाएगा। अच्छा, बोर्ड थोड़ा टेढ़ा लग रहा, उसको सही कर। ओके, अभी आई थिंक ठीक है। ओके, direction by the third side, this one is third, third side of the triangle taken
in the opposite order. अब बेटा ये जो स्टेटमेंट है बहुत देख के बहुत बड़ा लगता है, लेकिन समझ लोगे तो बहुत आसान है. देखो बेटा, एक वेक्टर है, दो वेक्टर, ये दोनों, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है. दैट मीन्स इसका ये वाला हेड होता है, ये वाला टेल होता है. हेड और इसका हेड, इसका टेल. If two vectors, दो vectors can be represented both in magnitude, this one is the magnitude, तो ट्रायंगल का साइड मैग्नीट्यूड, और ये इतना बड़ा तो ये भी इतना बड़ा ही. हाँ, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, this is the direction, this is the direction. कितना साइड इस ट्रायंगल का? दो साइड, एक साइड एक साइड. Magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order. ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. Taken in same order. मतलब एक ही ऑर्डर में, ऐसे फिर ऐसे, same order. Then the resultant is represented. Resultant is this one. Completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. ये इसका इधर. एक बार डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाता हूं. देखो ये ऑर्डर ऐसा है, तो ये वाला जो थर्ड साइड होगा ये ऑपोजिट ऑर्डर में, तो आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा. तो इसकी मतलब ये हुआ, ट्रायंगल लॉ क्या बताते हैं कि इस वेक्टर को इस साइड से रिप्रेजेंट करो, इस वेक्टर को इस साइड से रिप्रेजेंट कर दो. तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड से होगा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नहीं, इसका डायरेक्शन था, ये तो सेम डायरेक्शन, लेकिन ये वाला ऑर्डर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वाला ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसा. जब तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, ए यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे गया, है ना. दैट मीन्स ए इनिशियल, ए वाला फाइनल. तो इनिशियल से फाइनल तक जो जाता है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो यही वाला इसका रिजल्टेंट हुआ. तो जब हम लोग दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसका ट्रायंगल का दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मतलब ऐसे ऐसे same order, then their resultant will be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. Taken in opposite order. Same order मतलब ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन ये वाला ऐसे जा रहा है, इसको बोलते हैं opposite order. क्या समझ में आया बेटा? क्लियर? Yes or no? थोड़ा समझ में आया बेटा? ट्रायंगल लॉ वेक्टर थोड़ा समझ में आया? ओके, अच्छा ठीक है. मैं हिमांशु प्रेजेंट हूँ. गुड. ट्रायंगल लॉ वेक्टर लास्ट टाइम में हमने ये बताया था कि वेक्टर कितने टाइप्स के हैं, वेक्टर क्या क्या है, और आज बता रहा था कि जब वेक्टर का हम लोग डेफिनेशन देते हैं. देखो, the physical quantity which has both magnitude and direction and obeys triangle law of vector, नहीं तो parallelogram law of vector addition and subtraction is called vector. तो यहाँ पे क्या आएगा? वेक्टर है. तो वेक्टर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ, अभी इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोलेंगे, उसको फॉलो भी करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर. ओके, सुधा प्रेजेंट हो. गुड. अच्छा, दूसरा, दो वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा.
दो वेक्टर तभी इक्वल होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगी, लेंथ बराबर होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा. Two vectors are said to be equal if they have equal magnitude and same direction. Equal magnitude and same direction. Okay. अभी ये वाला भी क्लियर हुआ कि दो इक्वल वेक्टर होना है तो दोनों का. अच्छा एक और बार बता दूं. ओके ओके एक हर्षिका प्रेजेंट हो, गुड. सुधांशु प्रेजेंट. ओके एक मिनट एक और बार बताता हूँ. ठीक है बता. जो हम लोग 9th क्लास में का डेफिनेशन पढ़ा, वेक्टर का डेफिनेशन क्या था? फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन, दे इट इज कॉल्ड वेक्टर. लेकिन उसके साथ और भी चीज है. मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और के जो लॉ है जैसे ट्रायंगल लॉ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर, इसको भी ओबे करना चाहिए. दैट मीन्स तीन चीजें. नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, नंबर 3 ओबे करना चाहिए. तो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे लॉज. व्हाट आर द तीन वेक्टर लॉज? ट्रायंगल लॉ वेक्टर. तो आज हमको क्या करना है कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ये दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बिकॉज हमने जब यहाँ पे लिख रहा हूं तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर क्या होता है और पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या होता है उसके बारे में बताना है. ठीक है. तो हमें पहले ही बता रहा था कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करूंगा. तो ये तीनों चीज है वेक्टर. सुधांशु फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? अच्छा प्रेजेंट हो, गुड. सुधांशु फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? एवरीबॉडी फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? Yes or no? Sudhanshu? Okay. Now we are going for the second point. Last time हमने बोला था लिखाया था कुछ नहीं, तो आज में लिखाएंगे फिर बताएंगे. ओके. टू वेक्टर आर सेम इक्वल. दो वेक्टर इक्वल होगा कब होगा? जब दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों का लेंथ बराबर होगा और सेम डायरेक्शन होगा. दो वेक्टर तभी इक्वल होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम. So the second point is clear now. So second point is clear. Sudhanshu, second point is clear. Acha, okay, good. Now we are going for the third point. Point number 3. Okay. Point number 3 is written. The combination of two or more vectors. Combination of टू और मोर वेक्टर्स. दो वेक्टर हो नहीं तो दो से ज्यादा हो. अभी जो भी एग्जांपल हमने दिया दो वेक्टर को लेके दे रहा हूं. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट. एग्जैक्टली वही इफेक्ट देगा. ओके. सेम इफेक्ट द टू और मोर वेक्टर कलेक्टिवली प्रोड्यूस. दो वेक्टर जो इफेक्ट देते हैं उसी का ही बराबर इफेक्ट देने वाले जो वेक्टर होगा उसको हम कौन सा वेक्टर कहेंगे बेटा? दो वेक्टर जो काम कर सकते हैं, कोई एक तीसरा वेक्टर अकेला वो काम कर रहे हैं, तो तीसरे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बताइए. द इफेक्ट व्हिच इज गिवन बाय द टू वेक्टर्स, a single vector is giving the same effect, then that vector called resultant of vector. Then it is called resultant of vector. तो यहाँ पे क्या आएगा? Produce is called resultant vector. Resultant
vector. Okay, definition is clear now. Okay, good. Acha. Okay, clear. Nikhil, is it clear? Vivek, is it clear, beta? Pranjal, are you present? Okay, जो present है clear है ना? तेजेंद्र, okay, good. ठीक, क्लियर हो जाएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बताएंगे बेटा. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, नाउ रिगार्डिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, मैंने यहाँ पे दिया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो अभी फिजिक्स में मान लो कोई दो वेक्टर है, मान लो देखो मैंने इसे दो वेक्टर बना रहा हूँ बेटा. ऐसे एक वेक्टर है, दिस इज द हेड एंड दिस वन इज द टेल. अनदर वेक्टर इज लाइक दिस. ओके, सो दो वेक्टर है, तो यहां से पहले इधर आया, उसके बाद यहां पे गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? यही वाला होगा ना, यहां से यहां तक. तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में. जब डायरेक्शन सीक्वेंस में होगा तो बोलते हैं सेम ऑर्डर. तो ये वाला तो इस ऑर्डर में जा रहा है ना, ट्रायंगल ये वाला इधर सेम ऑर्डर, लेकिन ये रिजल्टेंट इधर जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट ऑर्डर. इन लोग ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑर्डर. लेकिन ये वाला तो ऐसे जा रहा है ना, इसको बोलेंगे ऑपोजिट ऑर्डर. एक बार हम बताते हैं. देखो, कोई हमने ट्रायंगल बनाया, इसे बोलते हैं सेम ऑर्डर. और मान लो ये इधर, ये इधर, ये वाला इधर, तो ऑपोजिट ऑर्डर. ये दोनों बात क्लियर होना चाहिए. तो हमने, तो इसका जो होगा और ये जो होगा, तो इस पॉइंट से इधर आया, यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा ना. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसी को तो बोलते हैं रिजल्टेंट. ओके, तो इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स, one vector A, another vector is B. Okay, if two vectors can be represented, can be, so it is represented in the triangle. Triangle के हिसाब से, इस ट्रायंगल से रिप्रेजेंट, इस साइड से. इन मैग्नीट्यूड जितना लेंथ है, इस साइड भी उतना लेंथ का है. इसका ये वाला डायरेक्शन है, इसका भी ये वाला डायरेक्शन है. ये दोनों का भी डायरेक्शन सेम है. तो पहले दो वेक्टर में इसको इस साइड से रिप्रेजेंट किया, और इस वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय सेकंड साइड. देन द रिजल्टेंट रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये वाला इस ऑर्डर में लिया था, ये वाला ऑपोजिट ऑर्डर में है. तो इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by two sides, first, second, two sides of a triangle in the same order, then the resultant, this one the resultant, is represented completely both in magnitude. यहां से यहां तक resultant है, magnitude है, and direction उसका ये है, both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. Sudhanshu, is it clear? Sudhanshu, is it clear? The statement is clear, beta. Fourth point. Tejinder, are you present? Tejinder, are you present? अभिनव, अच्छा विवेक तो प्रेजेंट है. अच्छा, ओके, ठीक है. ओके ओके ओके, गुड, ठीक है. क्या स्टेटमेंट क्लियर हुआ? एक बार सुनाता हूं तुम लोग को, एक बार तुम लोग को सुना देता हूं. If two vectors
are represented by any two sides of a triangle in magnitude as well as direction, then their resultant will be taken in same order. Then their resultant will be represented by the third side of the triangle taken in opposite order. Okay, is clear? अच्छा, इसके बाद इसका फोटो सेंड कर अब बेटा देखो यहाँ पे तो ऐसा वेक्टर था, लेकिन कोई दो कोइनिशियल वेक्टर हो गया तो ऐसा भी तो वेक्टर हो सकता बेटा, एक ही पॉइंट से अराइज हो रहा है। एक ही पॉइंट से जब अराइज होते हैं तो उसको थोड़ी तरफ से बना देता हूं, जैसे मतलब ऐसे वेक्टर है और ऐसे एक वेक्टर है, तो दोनों का तो सेम पॉइंट से जा रहा है ना, तो देयर पॉइंट इज फिक्स, तो कोइनिशियल वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर। ये दोनों तो कोइनिशियल नहीं था, लेकिन ये दोनों वेक्टर अभी कोइनिशियल वेक्टर है। ये वाला बी वेक्टर नहीं था जैसा हम लोग लिखा, ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर। तो इसको ऐड करने के लिए कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस टाइप का वेक्टर है तो उसके लिए क्या? पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी एक कोइनिशियल वेक्टर है, ओके, इसके लिए क्या होगा? दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट्स दैट
that if two vectors are acting on a particle, सही बात है, ये दोनों इसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है. हमने इस पार्टिकल का नाम दे दिया एम. ओके, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है. एट द सेम टाइम तो दोनों एक साथ इस पार्टिकल को ऊपर एक्ट कर रहे हैं. बी रिप्रेजेंटेड in मैग्नीट्यूड, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two adjacent sides of a पैराग्राम. मतलब यहां से एक पैराग्राम है. तो अभी ये वाला एम ओपी इस पैराग्राम है. इस पैराग्राम का ए साइड पैरेलल है, ए साइड पैरेलल है. तो इस साइड से ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड से बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्या बोला, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल at the same time be represented in magnitude, यहां से यहां तक magnitude and direction है, यहां से यहां तक magnitude ये वाला डायरेक्शन. ओके, तो कोई नहीं वेक्टर हो तो पैराग्राम है, कोई इनिशियल वेक्टर नहीं हो तो ट्रायंगल लो है. be represented in magnitude and direction by the two adjacent side है दोनों, two adjacent sides of a parallelogram. बेटा इसको हटा देता हूं. drawn from a point कौन सा एम पॉइंट, ये दोनों जो ड्रॉ हुआ कौन सा एम पॉइंट से ड्रॉ हुआ. drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction
by the diagonal. कौन सा? ये वाला diagonal. By the diagonal of the parallelogram बेटा ये पैराग्राम के जो डायगोनल दो होता है ना, लेकिन जिस पॉइंट से दोनों को ड्रॉ किया उसी पॉइंट से इसका डायगोनल होना चाहिए, उसी पॉइंट से डायगोनल होना चाहिए. ओके, तो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैराग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट. अभी देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट थोड़ा बोरिंग टाइप का लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन देखो आसान है. क्या है देखो, मान लो हमने तुमको इस टाइप का दो वेक्टर बोला था, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, दो वेक्टर है, लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट से जा रहा है तो वो इनिशियल वेक्टर है, लेकिन ये वाला कोई इनिशियल वेक्टर नहीं था. ये था लो, लेकिन जब दो वेक्टर इस टाइप का है उसका एडिशन कैसे करेंगे, उसका रिजल्टेंट फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए फिर दूसरा लॉ आया. कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. ये लॉ क्या बताते हैं? इट स्टेट्स दैट टू वेक्टर्स, एक वेक्टर दो वेक्टर, और एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल को एक्ट कर रहा है. ये जो पॉइंट है यहाँ पे at the same time this one is represented by this side and this one is represented by this side of a parallelogram. कौन सा? parallelogram AMOP. in magnitude and direction. ये वाला इसका magnitude यहाँ पे छोटा वाला है because diagonal जाएगा नहीं है. ओके, इसका magnitude है और ये वाला डायरेक्शन यहाँ से B का magnitude. टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से पैरेललोग्राम के साइड्स को ड्रॉ किया गया एडजेसेंट साइड. देन द रिजल्टेंट, कौन सा? ये वाला रिजल्टेंट है आर वेक्टर. देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड. दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम drawn from the same point. same point कौन सा पॉइंट? इस पॉइंट. जिस पॉइंट से दो वेक्टर को हम लोग ड्रॉ किया उसी पॉइंट से जो डायगोनल होगा वही वाला डायगोनल उसका रिजल्टेंट को बताएगा. ये इसका स्टेटमेंट हुआ. व्हाट इज द स्टेटमेंट? ये टू वेक्टर्स, देखो बेटा वेक्टर्स अभी कैसा, वेक्टर अभी ये इस टाइप का, एक वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा, तो इससे क्या बना? पैरेललोग्राम बना देंगे. ऐसे पैरेललोग्राम बना देंगे, यहां से भी होगा तो ये वाला इसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा. तो इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम both in magnitude and direction originating from a point, then their resultant in magnitude and direction will be represented by of the parallelogram. पैरेललोग्राम का डायग्राम ये भी होता है, ये भी होता है डायगोनल. लेकिन कौन सा डायगोनल? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम drawn from the same point. इसी पॉइंट से. अच्छा, ये स्टेटमेंट समझ में आया? दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? यस और नो एक बार लिखिए. अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है. अभी इसके जो डायग्राम जो बना ये इसका स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट से हमने इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और उस फॉर्मूला से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं,
स्टेटमेंट कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है, लेकिन ये आ गया तो ध्यान रखना, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, और यहाँ पे ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, अब ये वाला हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल गया। अब इसका जो 6 पॉइंट है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो ऐसे करके बना लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा पी वेक्टर, ये वेक्टर, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एम एन भी बोला था, ये वाला आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एम तक है। अभी यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से आगे बढ़ाएंगे, ये वाला 90 डिग्री है, एम एन ओ पी, ये वाला को क्यू बोल दिया, ये वाला एंगल थीटा, ये लाइन पैरेलल होता है ना बेटा, तो corresponding angle are equal, so theta will be theta. अभी हम लोग को ट्रिकोनमेट्री को यूज करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ट्रिकोनमेट्री को यूज करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये वाला बी है, ये वाला बी है, तो ये वाला भी बी वेक्टर। तो हम लोग का इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन ट्रायंगल, ओ क्यू एन एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ बोर्ड दिखाई दे रहा है, ओ क्यू अपॉन एन ओ एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो क्यू जो ए वाला था, ए ओ एन किसके बराबर था, बी के बराबर था, बी वेक्टर है, इक्वल टू साइन थीटा। तो ओ क्यू इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो क्यू का वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा, बी ठीक से लिख देता हूं, बी साइन थीटा। एन क्यू divided by ON, that is base upon hypotenuse, equal to cos theta. तो एन क्यू ये कौन सा बी है, cos थीटा, एन क्यू इक्वल्स टू बी cos थीटा। यहां तक क्लियर, यस और नो, यहां तक क्लियर है बेटा, यस और नो एक बार बताइए, 1 मिनट, शायद तुम लोग बोर हो गए। ओके बेटा, ये यहाँ पे आज जो हमने 2 लॉ बताया, लॉ दोनों तो हट है, लेकिन हम लोग बीच बीच में इसको रिवीजन करेंगे, स्टेटमेंट याद हो जाएगा। आज हम लोग को समझ में आ गया, जब मान लो कि वेक्टर को इनिशियल होता है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, और जब कोई इनिशियल नहीं होता तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई कर रहे हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड होता है वो हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ओके, एक बार डेरिवेशन को कर देता हूं, फिर तुम लोग को याद आ जाएगा। तो अब ये ट्रायंगल कौन सा, ओ
क्यू एम। अच्छा, तुम लोग को ये लग सकती है कि ओ क्यू ए बी है तो ए बी तो नहीं दे सकते, तो इसीलिए इस तरीके से ट्रायंगल का नाम दिया। तो ओ एम का स्क्वायर, एमओ का स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनियस है, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू किसके बराबर है, वो तो पता ही है, ओ क्यू बी साइन थीटा के बराबर है, होल स्क्वायर। एम क्यू किसके बराबर है, एम एन प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर। एम का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एम एन जो था वो तो ये है, एन क्यू जो है वो क्या है, एन क्यू, एन क्यू बी cos थीटा होल स्क्वायर है, और एक लाइन आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टू ए बी cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू बी इंटू cos थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से एक लाइन खींच लेता हूं। एमओ किसके बराबर था, आर वेक्टर। एमओ तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, तो यहां पे लिख देता हूं आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा, थोड़ा बाहर जाएगा तो इस तरफ लिख देता हूं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हम लोग पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, एक बार देख देता हूं, शायद बोर्ड के बाहर चला, बोर्ड के बाहर चला गया। एक प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा plus b square into 1. That means r square equals to a square plus b square plus 2ab cos theta। इस तरीके से ध्यान रखें, r equals to क्या होगा, अंडर रूट a square plus b square 2ab। थीटा कौन है, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको थीटा कहते हैं, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर को तो समझ लिया, उससे इसका जो रिजल्टेंट आया उस रिजल्टेंट को फाइंड किया। उस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर बेटा? और एक बार रिपीट करता हूं, एक मिनट। अच्छा बेटा, यहां तक अभी एक दो क्वेश्चंस दे देंगे बस, आज यहां तक करना, उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग बहुत बढ़िया लगेगा। ओके, हाँ हाँ सभी सेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेंड कर रहे हो। ओके सुधांशु,
गुड, बहुत सभी सेंड कर रहे। ओके, तो इसका रिजल्टेंट आ गया। पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर बना लिया, ए वेक्टर, दिस द बी वेक्टर। फिर यहां से इस लाइन को बढ़ा के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए वाला और ए वाला पैरेलल है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। उसके बाद इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो ओ क्यू अपॉन बी, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज sin थीटा। तो ओ क्यू पे जाएगा ओ क्यू, hypotenuse this one, that is the b sin theta. So OQ equal to b sin theta. OQ equals to b sin theta. Okay. After that, NQ upon ON, base upon hypotenuse cos theta. The NQ ON this one, ON, that is b. The NQ equal to b cos theta. Now we are considering the triangle, bigger triangle, that is OQM. OQM ट्रायंगल में तो तुम्हारा R है, रिजल्टेंट इस वाले बड़े ट्रायंगल में है। OQM ट्रायंगल में MO का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर, MO का स्क्वायर b sin थीटा होल स्क्वायर, NQ इक्वल्स टू MN प्लस NQ, MN equals to a vector, so we are writing a NQ b cos theta, we are writing b cos theta. So on solving we are getting b square sin square theta, a square plus 2ab plus b square, that is 2ab cos theta, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, b square cos square theta. Now we are arranging it, पहले स्क्वायर, उसके बाद 2ab cos थीटा वाला टर्म, उसके बाद b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. We are taking common b square from here, so it is sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा. Okay, sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा. sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab cos थीटा. तो रिजल्टेंट कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आज फिजिक्स में यहाँ तक, इसके बाद हम केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग बुक देख देख के आंसर्स करोगे, ठीक है बेटा। इसका फोटो भी सेंड करना। सुधांशु वो वाला नंबर में सेंड कर देना, ग्रुप में मत सेंड करना, ग्रुप में चेक करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तुम वो 7895 वाले में होमवर्क सेंड करो, ठीक है बेटा, इसमें नहीं करके हैं। Today we discussed about laws of vector, that is basically triangle law of vector and parallelogram law of vector. After that we find that
resultant vector through the parallelogram law of vector r equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta। तो आज पहला फॉर्मूला हुआ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा और इसके बाद फिर कल नेक्स्ट क्लास में और आगे करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, now chemistry chapter 3. At present, number of known elements is, at present number of known element is, कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा एट प्रेजेंट? कितना एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं? known elements around how much? How many? How many elements? That is 114. 114 elements are known today. Okay, around, approximate. Now lithium, सोडियम, पोटेशियम, इसका जो लिथियम का एटॉमिक वेट जो है वो हो जाता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है 39 पोटेशियम। अभी 7 + 39 / 2 कर दें तो कितना आता है? 46 / 2, that is 23. Okay. These refers to which law? ये वाला पहला लॉ आया था पीरियोडिसिटी के बारे में। पहले एक साइंटिस्ट थे, उसने पहले देखा कुछ एलिमेंट को अरेंज किया था,
ओके, 3 एलिमेंट पे अरेंज किया, लेकिन कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हुआ था। अरेंज किया तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स है, तो उसको बोला जाता है ट्राइड्स। जो 3 एलिमेंट का पेयर, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइड्स। इसके फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट का होता है। दिस रेफर्स टू व्हिच लॉ? दैट इज लॉ ऑफ ट्राइड्स। इसको बोलते हैं डोबेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। हाँ बेटा, तुम लोग का बुक में है बेटा, डोबेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स है। डोबेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स है बेटा, यस और नो? देखो बुक का फर्स्ट पेज भी है, फर्स्ट एंड सेकंड पेज, फर्स्ट एंड सेकंड पेज में। ओके ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पेज भी देखो। मिल गया बेटा? केमिस्ट्री का बुक निकाल लो। इस चैप्टर में जो पहला लॉ है, अच्छा ओके गुड, पहला लॉ जो है डोबेनियर लॉ ऑफ ट्रेड्स। ओके, मिल गया अभी। ओके गुड। उसमें एक टेबल बना होगा, देखोगे। स्टेटमेंट को इसके बाद में लिखता हूं, ओनली कुछ एलिमेंट के लिए था। जैसे हमने लिखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 7, 23, 39। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 40, 88, 137, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 35.5, 80, 127। अभी इस चीज को डोबेनियर ने ऑब्जर्व किया था, कुछ ही एलिमेंट, मतलब 3, 3, 6, 3, 9, 9, 10 एलिमेंट के बारे में ऐसे देखा। यहां पे जब देख रहे हैं 7 + 39, ये तो मैंने कर दिया इधर, फिर इसका बताता हूं। इसमें 40 + 137/2, that will be 7, 7, 177/2, that is 8.5। एग्जैक्ट नहीं आया, 177, 16, फिर 8 to 16, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। 35.5 plus 127/2, 127, 35.5, 5, 12, 6, 1, 162.5/2,
that is his 81.25, लेकिन ये वाला एग्जैक्ट था। तो इसने कुछ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देख के इसके बीच में मतलब कोई सिमिलैरिटी दिखाने का कोशिश किया था बिगिनिंग में। ओके, तो तुम्हारा बुक में देखो इसमें लिखा गया है लॉ ऑफ ट्रायड के बारे में। जॉन डोवेनियर was the first to consider the idea of trends among properties. By 1829, he noted the similarity among the physical and chemical properties of several groups of three elements. In each case, he noticed that middle element of the each triad has an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other. तो स्टेटमेंट क्या हुआ? स्टेटमेंट आया मिडिल element of each of the triads had an atomic weight about halfway between atomic weights of the other two elements. तो डोवेनियर ने पहले केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में सिमिलरिटी पता करने गया। जब इसके अरेंजमेंट कर रहा था तो उसने कुछ एलिमेंट को तीन तीन में ग्रुप बना लिया। तीन तीन का ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रायड कहते हैं। जब उन लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया तब देखा जो मिडिल एलिमेंट का ईच ट्रायड में मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है दैट इज जस्ट हाफ of the atomic weight of the other two elements. This is the statement. तो हम लोग इसमें बिगिनिंग में इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे कि अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। पहला साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व थे दैट इज डोवेनियर। टू फाइंड द सिमिलरिटीज इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स he arranged the elements in increasing order of their atomic masses. For three elements, he named these as triads. After that, he gave a statement. Middle element of each of the triads had an atomic weight about halfway between the atomic weights of other two elements. This is the exact. This is approximate. This one also approximate.
इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? इज इट क्लियर? अच्छा टाइम हो गया? ओहो, अच्छा टाइम हो गया। अच्छा तो मैं एक चीज तुम लोग से पूछता हूं, जरूर इसका आंसर कीजिएगा। ओके, कोई एक एलिमेंट का नाम बताओ जिसके प्लैनेट का नाम से है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के नाम से कौन सा एलिमेंट है, नाम लिखिए उसका। प्लैनेट्स के नाम से व्हिच एलिमेंट, किसका नाम प्लैनेट्स के नाम से है? लिखिए बेटा। यूरेनियम, प्लूटोनियम, यस करेक्ट आंसर। प्लेस के नाम से बताओ, प्लेस का नाम, कौन सा एलिमेंट का नाम प्लेस के नाम से है? प्लेस, हाँ प्लूटोनियम, करेक्ट आंसर। यूरेनियम, प्लूटोनियम, ओके करेक्ट आंसर। प्लेस नेम, कैलिफोर्नियम, प्लेस नेम किस से? कैलिफोर्नियम, लिखिए कैलिफोर्नियम। आर्गन, आर्गन कौन सी जगह बेटा? अच्छा ठीक है, कैलिफोर्निया, गुड। एक चीज और लिखो बेटा, आगरा। नहीं नहीं नहीं, आर्गन आगरा से नहीं आया बेटा, आर्गन आगरा से नहीं आया, वो सब हमारे देश के नहीं, बाहर का देश का काम है सब। अच्छा दूसरा, साइंटिस्ट का नाम से, साइंटिस्ट का नाम से कुछ एलिमेंट का नाम बताइए बेटा। साइंटिस्ट का नाम से बताइए। साइंटिस्ट, देखो देखो लिखा होगा, देखो कहीं लिखा है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम लिखा कहीं? यस रदरफोर्डियम, गुड, रदरफोर्डियम, ओके रदरफोर्डियम, गुड। और उसके बाद बेटा बात नहीं करे कोई। दैट स्पेस नेम इज रदरफोर्डियम, सॉरी आइंस्टाइनियम, ओके गुड, बहुत बढ़िया, ओके ओके। ठीक है, और एक चीज तुम लोग को पूछता हूं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा फैमिली एंड ग्रुप दोनों सेम है डिफरेंट है? हाँ ठीक है, मेंडेलियन के टाइम में फैमिली बोला जाता, बाद में तो ग्रुप बोला जाता है। अच्छा बताइए 16 किसका आंसर है? 16, 16 किसी का नहीं है, 18, 18 इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने बेटा? टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, ओके गुड। और कल तुम लोग को सिखाएंगे कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट है, क्यों है, ये कल सिखा जाएगा कि जो पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, क्यों होते हैं, ये कल हम लोग सिखाएंगे। ओके ओके गुड, अभी क्लास एंड करता हूँ, ठीक है, अच्छा पढ़ाई हो, अच्छा ओके। हाँ बेटा आज बिगिनिंग में फिजिक्स पढ़ाया, उसमें वेक्टर के बारे में जो नोट्स देना था वो मैंने बता दिया, और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एंड ट्रायंगल लॉ वेक्टर उसके बारे में बात किया, रिजल्टेंट कैसे फाइंड होता है उसके बारे में बता दिया। ओके, और केमिस्ट्री का पहला जो लॉ है डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, ओके उसके बारे में बताया, ट्राइड्स क्या होते हैं, कैसा करके अरेंज किया जाता है, ये सारे। हाँ बेटा ओके, तो कल फिर हम लोग इसी 2 टॉपिक को ही आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके क्लास एंड करते।